Good morning, students. Class for 10th Science, chapter Electricity, class 3. This is the third class for this chapter. Previous two classes, you should have seen those classes. I have also given you some assignments. So, some of you have given, some of you have not. So, do those assignments. Okay. Now, focus on this class. Today, we are going to do very important topic on this chapter, numericals based on current, potential difference, resistance. The whole concept of this chapter, the whole gist of this chapter, you will understand now. Okay. So previously in two classes, what you have studied, लास्ट टू क्लासेस में आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज कीजिए. You studied current, potential difference, resistance. You know what is potential difference, what is 1 volt. You know units of all parameters, unit of current, unit of potential difference. What is the what is 1 volt? Okay, what is 1 ampere? How we can combine different resistances, combination of resistors in series, in parallel. What are the different properties of these circuits? You have studied all of these. Today we are going to proceed with combination of resistances in series and parallel. You have done very simple circuits, like you have drawn 3 resistors, 1, 2, 3, and you can say that what will be the equivalent resistance of this circuit. You have also done this, this and this. This is, parallel circuit. All should be connected to a battery. You know very well that this is series and this is parallel. All right. So, how do you know that which circuit is in series and which resistors are in parallel? You know that if the resistors are a part of the same wire, you can see these 3 resistors are in the same wire, so these are in series. Okay, and you can see that these 3 resistors are in parallel because they are different parts of the wire. This is different wire, this is different, and this is different. So these are in parallel. You should differentiate between series and parallel combination. So, if the circuit is a bit complex, like how can we combine different resistances? It's not necessary that all circuits are in series and all resistors are in parallel. This is not necessary. ऐसा भी हो सकता है कि there are 2 resistors in series and 1 in parallel in this circuit. Look at this circuit closely. What you can see, these 2 are in series and these 2 are in series, but this resistor is in parallel with these 2 resistors. So how can we find out equivalent resistors if this is 2 ohm, this is 4 ohm, and that is 6 ohm? Find the total resistance of this circuit. How can you find out? You simply know how to combine resistors in series and how to combine resistors in parallel. But if 2 are in series and 1 are in parallel, what can you do? In that case, first you find out which 2 resistors are in series. कौन से resistors series में? You find out equivalent of this and consider that this is only one resistor. For example, this is 2, this is 4. 2 and 4 are in series, so equivalent resistance will be 6. Alright? Now, consider that this is only a single resistor with 6 ohms. Now, 2 resistors, one is 6 ohm and another is 6 ohm, is combined in parallel. Okay, then you find out the equivalent resistors of these 2 resistances. Okay, so what's actually happening here?
We start with series. This is R1, this is R2, and that is R3. R1 plus R2 series will be 2 plus 4 is equal to 6 ohm. Alright. Now, this is an equivalent resistance of 6 ohms. ये बन गया 6 ohm का resistance. This circuit is equivalent to that circuit. Look at these both circuits closely. There is no difference because 2 plus 4 combines to form 6 ohm resistors, and now 2 resistors are in series. So we can find out 1 by 6 plus 1 by 6. That gives us total resistance. Alright, this will be 2 by 6. We write this 1 by RT. 1 by RT is equal to, what is the formula for parallel combination? 1 by RT is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by 6 plus 1 by 6 gives us 1 by 3. And this is the value of 1 by R. So R will be 3 ohms. Okay. So that's how we solve any combination of resistances. If any doubt, please ask. No doubt? Okay. I will change this circuit a little bit and you will find out what will be the resistance. Total resistance. You can see 2 resistances are in series and 1 is in parallel of them. If I change this like 2 in parallel and 1 in series, like this. 2 resistances are in parallel. You can see clearly that these are in parallel because they are different parts. How will you combine one resistance in series? You have to combine in series with both of them like this. That's how you draw a circuit for combination of resistances in which 2 are in parallel and 1 is in series with both the resistances. Okay, 220 volt generally battery होती है. 10 ohm, 20 ohms and 40 ohms. Find the equivalent resistance of this circuit. How can you find out? Very simple. 2 are in parallel. So first find out equivalent resistance of these 2 parallel circuits. Resistances. Okay. Then if you make an equivalent circuit, that will be like this. When you find out equivalent of this, you can consider it as only one resistance is combined with another resistance. Okay. So first find out equivalent of this parallel resistances. What is the formula? 1 by R is equal to 1 by 10 plus 1 by 20. This is 20, this is 10. 1 by 10 plus 1 by 20. That will be 3 by 20. Alright, but this is the value of 1 by R. Always remember, this is not the value of R. So R will be 20 by 3 ohms. Ohm is the unit of resistance. Now, this resistance is equivalent to that. Now we have 2 resistances. One is 20 by 3 and another is 40. Okay. इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हमने एक कर लिया, टोटल निकाल लिया to 20 by 3. Now you can see in second figure that there are 2 resistances in parallel. So what will be the total resistance? RT will be R1 plus R2, 20 by 3 plus 40. You can find out its answer. That will be 140 by 3 ohms. 46.6 ohms. Okay. This is the equivalent resistance of this circuit.
If any doubt, you can learn. First, because these are not entirely in series, not totally in parallel, two are in parallel, one in series. So first, make this single one, 1 by 10 plus 1 by 20 gives us 20 by 3. Then these two, this system of resistors and this resistor are in series, like this, that circuit. So then we find out total resistance in series. Alright? You can try out different combinations. You can make as many as combinations of resistors you want. So try to make any system of resistors yourself. कोई भी रजिस्टर बनाइए, खुद ही आप न्यूमेरिकल क्रिएट करो, खुद ही उसका सॉल्यूशन ट्राई करो. You can add one resistor here, okay? You can add one resistor here. You can add any resistor and find out the total resistance. Nobody is answering any questions, not asking any doubts. Why is it so? I am giving you a numerical, you will find out the answer and write in the comments. Very simple, resistance. 1, 2, 3, 4 resistances are in a circuit. Okay, 10, 20, 40 and 80. Find out the total resistance of this circuit. You have to, everybody has to find out answer. Do your work honestly and do this numerical and tell me the answer. For those who are not able to understand, I repeat. Since two are in series, you can see 10 and 20 are in series. First add them up. जोड़ दो दोनों को 30 ohms का एक रेजिस्टर हमको मिल जाए. 40 plus 80 120 ohms का एक रेजिस्टर हमें मिल गया. एक रेजिस्टर ऊपर है, एक नीचे है. Both are in parallel, दोनों अलग अलग वायर्स में हैं. So then find out the parallel combination resistance. I will solve this for you. After this, you will solve yourself. So take this wire. What will be the equivalent resistance? Make an equivalent diagram like this. This is the equivalent diagram for this. Say this R1 and say this R2. Okay. Now start writing. R1 will be, what will be the equivalent resistance? 10 plus 20, 30. 30 ohms. 30 ohms. R2 will be 40 plus 80, 120 ohms. Now you have two resistances R1 and R2 in parallel. So find out the total resistance RT. RT will be 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to 1 by 30 plus 1 by 20. That will be 5 by 120. That is 1 by RT. 1 by RT. Okay, don't make this mistake. 1 by RT is equal to 5 by 120. It implies that RT is equal to 120 by 5. 24 ohms. 24 ohms is the equivalent resistance of this circuit. Look at these figures closely and try to write by yourself. Okay. You can make different combinations of resistors by yourself. As we know,
व्हेन यू कंबाइन, जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हो तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन दे कंबाइन इन सीरीज, बिकॉज सीरीज में आप सिंपली उन्हें ऐड कर देते हो तो ऑब्वियसली टोटल वैल्यू ज्यादा है। बट व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन पैरेलल, then the total resistance is the minimum value। रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में आएगी वो सबसे मिनिमम होगी। ओके, जैसे 246 है, सीरीज में होगी तो टोटल वैल्यू क्या होगी 12, सबसे ज्यादा है। बट अगर 246 पैरेलल में होंगे then value will be less than 2। okay, so the question is, how can you combine different resistances, say 10, 20, 30, to get the maximum resistance? Your answer will be, we will combine them in series, and if we have to get minimum resistance, कम से कम resistance हमें चाहिए, then we will combine in parallel। all right, another type of question based on this concept is, how can you combine three resistances, 2 ohms, 3 ohms and 8 ohms, so 6 ohms, 2, 3 and 6 ohms। these are the 3 resistances। आप इनको कैसे कंबाइन करेंगे? that equivalent resistance comes out to be 4 ohms and 1 ohm। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस को कैसे कंबाइन करें कि टोटल रेजिस्टेंस 4 आए और 1 आए। थिंक अबाउट दिस। Can anyone tell the answer? See, what are the different combinations? Series, parallel, okay? If all in series, all in parallel, 2 in series, 1 parallel, या फिर 2 parallel, 1 series। What are the different combinations? All series, all parallel, 1 series, 2 parallels, या फिर 2 series and 1 parallel। These are the different combinations। okay, आपको पता है if all the resistances are in series, अगर सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे value will be maximum। so you can see these are less value। सीरीज में तो वैल्यू क्या आएगी 11 ohms आएगी, so सीरीज वाला कैंसिल। okay, now we can try all in parallel। you know, when we combine resistors in parallel, the value comes out to be minimum, means कम से कम 6, 3, 2 सभी से कम वैल्यू आएगी 1। so you can understand कि जब हम सभी को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1 ohms। 4 ohms नहीं आएगा बिकॉज 4 is more than 2। in parallel resistance is minimum, that is 1 ohm। so answer of 2 is, we can combine these 3 resistors in parallel to get 1 ohm resistance। okay, how can you combine them in parallel? you know, you have to draw the circuit, you have to keep your pen and paper with yourself, you have to do this with me। 3 resistances are combined in parallel, 2 ohm, 3 ohm, 6। what will be the equivalent resistance? When you find out equivalent resistance, you will know very well that 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। so that comes out to be 1 ohms। you can check 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6, that will be 6 by 6, 1 ohms। and 1 ohm का रेसिप्रोकल करेंगे वो भी 1 ohm ही आएगा। so that is the answer for 2। what is the answer for 1? how can you combine them to get 4 ohm?
You can't combine them in series, you cannot combine them in parallel. Then you have to try different combinations. कैसे? 2 in series, 1 in parallel. Like this. One combination is this. Another combination may be 2 in parallel, like this, and 1 in series with both of them. These are the another two combinations which are possible. Two are connected in series and another one is parallel with both of them. Two are connected in parallel and the third one is connected in series with both of them. Okay. Now try it. 2 in series, 1 in parallel. Is that possible? Or 2 in parallel, 1 in series. Let's try this first, parallel combination. You know 4 is a whole number. कोई decimal number नहीं है, whole number है. So आप जब भी LCM लेते हो 1 by r करते हो, that should be a whole number. So 1 by 2 plus 1 by 6, that will be a whole number. How? 1 by 2 plus 1 by 6. That will be 3 plus 1, 4 by 6. Is that a whole number? No. So answer 4 ohms case में I is it. We try 3 and 6. 3 and 6. 1 by 3 plus 1 by 6. What will be the answer? 3 by 6. 1 by 2. So R will be 2. Okay. 3 और 6 को आपने पैरेलल में कंबाइन कर दिया तो आंसर आया आपका 2. So this is the equivalent resistance of 2. That circuit will not work. This circuit will work in this question. Okay. 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. That will be 2 ohms resistance. And another one is 2 ohms. So when 2 ohm and 2 ohm are combined in series, the answer will be 4 ohms. Alright, I hope you have understood something in this. You have to try out different combinations. अगर आप दो सीरीज में करते तो नहीं हो पाता. 2 plus 3, 5. 1 by 5 plus 1 by 6 will never be 4. 3 plus 6, 9. 1 by 9 plus 1 by 2 will never be 4. 2 plus 6, 8. 1 by 8 plus 1 by 3 कभी भी 4 नहीं हो सकता. So this circuit is wrong. Only this circuit will work, that is 2 in parallel and 1 in series. Okay. 3 and 6 जब parallel में होंगे, equivalent will be 2 ohms and 2 ohms and 2 ohms will be in series to get total 4 ohms resistance. Okay. If any doubt, is there any doubt? So in this way, we can combine these 3 resistors to get 4 ohm resistance. Okay. You can try out different combinations to get a whole number 4. There is a complex question given in your book. If you have understood this, you can this is the diagram given. Look closely. 2 resistors like this. Okay. And
This is the combination of resistance. Very complex but very easy. Okay. 10, 20, 30, 20, 10, 20, 20 ohms, 30 ohms. Okay, 10, 20, 30, 40 and 60. 40 ohms and 60 ohms. This is an NCERT question, so you should know. Look at this figure. These two, ये दोनों पैरेलल में है या फिर सीरीज में है? पैरेलल में है. These three, ये तीनों पैरेलल में है या फिर सीरीज में है? 10, 20 पैरेलल में है. 30, 40, 60. These are also in parallel because these are all different parts of the wire. ये अलग part है. This is different part. This is different. So आपको पता चल गया है कि ये दोनों पैरेलल में है. तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल लो. और डायग्राम कैसे बनेगा उसका? लाइक दिस. Equivalent diagram of this circuit is this. This is the equivalent diagram for this circuit. How? Because इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो एक रेजिस्टेंस बनेगा. इन तीनों का टोटल निकालेंगे तो एक रेजिस्टेंस बनेगा. Okay. So first find out equivalent resistance. This is R1. You can say it. You can name it anything, R1, R2 or RT, RP, which be. So R1 will be, what will be the value of R1? What is R1? R1 is the equivalent of this circuit. Parallel, what is the formula? 1 by R1 is equal to 1 by 10 plus 1 by 20. That will be 3 by 20. So R1 will be 20 by 3 ohms. This is 20 by 3. What is the value of R2? R2 is this. Total of this 1 by R2 will be 1 by 30 plus 1 by 40 plus 1 by 60. 1 by 30 plus 1 by 40 plus 1 by 60. You can take LCM. What will be LCM? 124 plus 3. Very basic maths you should know. 9 by 120. This is the value of 1 by R2. Find R2. R2 will be reciprocal. R2 will be 120 by 9 ohms. Okay. So value of this equivalent resistance is 120 by 9 ohms. Now, look at this figure closely. You will tell me कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या फिर पैरेलल में है. R1 and R2. In second figure, in this figure, R1 and R2 are in series or are in parallel. What do you think? Series. Almost sound is saying series. Anyone else? Mayur Joshi says series. If anyone thinks that this is parallel, that is wrong. दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि दोनों पैरेलल में है. But you can see, हम बैटरी हमेशा नीचे लगाते हैं. बट इस केस में बैटरी लेफ्ट साइड में लगी हुई है. ठीक है. दिस बैटरी इज ऑन लेफ्ट साइड. जब बैटरी लेफ्ट और राइट साइड में लगी हो तब पैरेलल और सीरीज में चेंज हो जाता है. कैसे? यू कैन सी दीस टू रेजिस्टर्स आर पार्ट्स ऑफ सेम वायर. जो वायर का जिस वायर में ये रेजिस्टेंस है उसी वायर में ये वाला रेजिस्टेंस. राइट. पैरेलल में कब होते हैं? पैरेलल में तब होते जब रेजिस्टर्स डिफरेंट पार्ट्स में होते. जैसे कि दिस वन. अगर बैटरी लेफ्ट साइड में लगी है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में होता है.
that combination of resistances in parallel. You can see, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स में रेजिस्टेंस, but in this case both the resistance is on same wire, so these are in series. Okay, so बैटरी अगर लेफ्ट राइट साइड में लगी हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि सीरीज में है या पैरेलल. So you can find out R1 plus R2 20 by 3 plus 120 by 9. Total resistance RT will be R1 plus R2 20 by 3 plus 120 by 9. That will be 60 plus 120, 180 by 9, 20 ohms. That is the final value of resistance. 20 ohms is the equivalent resistance of this circuit. R is equal to 20 ohms is the right answer. Very good. Any doubts? You should practice all the numericals from this book. आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसमें जो सोल्ड एग्जांपल्स हैं और जो अनसोल्ड एग्जांपल्स हैं उनको आप आज सोल्व करिएगा. दैट इज द assignment for today. Solve all the examples, solved exercises of chapter electricity. Okay, now we should proceed in. अभी तक आप सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे. ओके, इसके बाद आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. अनमोल साहू इज आस्किंग कि सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है. देखिए, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एक फॉर्मूला था जिसमें एक तरफ रेजिस्टेंस था दूसरी तरफ रेजिस्टिविटी. देखिए, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट वैल्यू. रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है. दैट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेंपरेचर. मतलब हर मटेरियल का की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी. कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होगी. ओके, आयरन की अलग होगी. सो रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन नेचर. इट इज ऑफ अ पार्टिकुलर मटेरियल बट रेजिस्टेंस इज नॉट सो कांस्टेंट. रेजिस्टेंस सिर्फ नेचर पर नहीं, वायर की लेंथ पर और ब्रेड्थ पर, थिकनेस पर भी डिपेंड करता है. अगर कॉपर की वायर को अगर हम आधा काट दें तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू. अगर हम कॉपर का वायर है आपके पास 1 मीटर का, आपने उसको बीच में से काट दिया तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. R is equal to rho L by 3. सो लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा. लेकिन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ये डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी. बेशक आप वायर को छोटा करो, मोटा करो, कुछ भी चेंज करो, जब तक कॉपर का वायर है रेजिस्टिविटी सेम रहे. ठीक है. सो रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द वायर, while resistance depends on various factors. Okay, clear? Is this doubt clear? Okay. Now, अब हम इसी चीज को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे. अभी आपने रेजिस्टेंस ही पढ़े हैं, अब आप एक और चीज देखेंगे. यस, ओके, डाउट इज क्लियर. सो नाउ वी विल प्रोसीड. इन लास्ट क्लास आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने समझा था. यू शुड रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए कि जब आप सीरीज में रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हो तो वोल्टेज सेम होती है या करंट सेम होता है.
है। चलो मैं दो सर्किट बना रहा हूँ, यू हैव टू आंसर। एक सर्किट ए है और दूसरा सर्किट वो है। These are two different circuits. You are familiar with them? You know what are the differences? Now tell me, what is the difference in current and voltage in these two circuits? I am saying one and I am saying two. This is first, this is second. In first figure, current in both resistance is same or different? Tell me. Write your answer. In one circuit, current in both resistance is same or different? You should know. This is same because series. But इसमें करंट जब फ्लो करता है तो वो डिवाइड हो जाता है। ये सब लास्ट क्लास में हो चुका है ना? These are different currents. So सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट, बट पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होती है डिफरेंट रेजिस्टर्स में। All right, that is the point. So the question is how you can combine ammeter and voltmeter. एमीटर वोल्टमीटर भी आपको पता चल गया है क्या होता है? नहीं पता चला तो लास्ट क्लास आपने नहीं देखी। एमीटर से करंट मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से पोटेंशियल। ठीक है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों? बिकॉज एमीटर में जो करंट होता है सीरीज में सेम होता है, सो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है तो वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दूसरा रीजन, सेकंड रीजन इज रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। अब आपको ये भी पता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो इसीलिए वोल्टमीटर को हम रेजिस्टेंस जो वोल्टमीटर है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है जो कि ज्यादा है वो टोटल रेजिस्टेंस मिलकर कम हो जाए। ओके, इसलिए हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस एंड हाई अमाउंट ऑफ करंट। सिमिलरली एमीटर का लो होता है तो हम उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ताकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम है तो वैल्यू एक्यूरेट है। सो द पॉइंट इज हाउ कैन यू कंबाइन एमीटर एंड वोल्टमीटर? Voltmeter is always connected in parallel. You know that in these resistors R1 and R2, in R1 and R2 voltage is different. So अगर आप वोल्टमीटर यहाँ लगा रहे हो एक, उसमें वैल्यू अलग आएगी, और एक वोल्टमीटर आप यहाँ लगा रहे हो उसमें वैल्यू अलग आएगी, और जो ये वोल्टेज है टोटल इसकी वैल्यू अलग है। ओके, so in series there are different voltage of different resistances. Current ammeter कैसे लगाओगे सर्किट में? You know that in series combination the current is same in each resistor and is equal to the total current. मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू हर जगह पर सेम होती है, टोटल भी वही रहेगी, इस रेजिस्टेंस में भी वही रहेगी और इस रेजिस्टेंस में भी वही रहेगी। सो आप एमीटर को किसी भी पॉइंट पर कनेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एमीटर में वैल्यू सेम आएगी। सो सीरीज में आप एमीटर को कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट अगर वोल्टमीटर लगाना है तो वैल्यू अलग अलग आएगी। क्लियर? If this is a parallel circuit, अगर ये पैरेलल सर्किट होता तब बताइए, तब एमीटर और वोल्टमीटर को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? करंट सेम कहां पर है, वोल्टेज सेम कहां पर है, डिफरेंट कहां है, ये बताइए। Can you tell me that value of current in these two resistors is same or different? Obviously different. There are two different currents flowing, but in parallel voltage is same. So it doesn't matter where you put the voltmeter, voltage is same. अगर आप voltmeter को
यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो तो भी वोल्टेज सेम है, अगर आप यहाँ करते हो तो भी वही वोल्टेज आएगी, और अगर आप दोनों के विद बोथ द रेजिस्टर्स कंबाइन करते हो तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। बिकॉज in parallel combination of resistances, the value of voltage is same at both the resistance and is equal to the total voltage. Voltage is same at every point in the parallel combination. So voltmeter को आप कभी भी ऐड कर कहीं भी ऐड कर सकते हो। एमीटर मानो आपको पता है कि करंट की वैल्यू दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग है। सो अगर आपने एमीटर सीरीज में यहाँ पर लगाया तो इसकी वैल्यू विल बी डिफरेंट, और अगर एक एमीटर यहाँ पर लगाया सो इस एमीटर में करंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी क्योंकि दोनों में करंट डिफरेंट है, और अगर आपने टोटल करंट निकालना है तो उसकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट and the total value of current is also different. All right. So that was the very basic but very important point. Now we should do some numericals based on this concept. Faizan Nasir, ammeter and voltmeter not connected in series. Only ammeter is connected in series. Voltmeter is connected in पैरेलल, कंफ्यूज मत हो। ओके, नाउ यू विल डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ याद है, V = I। इस न्यूमेरिकल के बेस पर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बेस पर आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। Very simple. We start from simplest one. Two devices, कोई भी दो devices, bulb, light, fan, कुछ भी, two resistors are connected in series with 220 volt battery. बैटरी जो है, जो हमारे घरों में वोल्टेज सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो दो डिवाइस कनेक्टेड है, एक बल्ब है, एक फैन है, जिसकी रेजिस्टेंस है, एक का 20 ओम्स है, दूसरे का 40 ओम्स। टेल मी द वैल्यू ऑफ करंट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। Tell me the value made by this formula V = I। एक तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ में ये चीज ध्यान रखनी है करंट कहाँ सेम है कहाँ डिफरेंट है। So tell me the value of question point 1 is point 1 क्या है? Question number 1 is value of current, ठीक है। सेकेंड इज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, अब आपको ये पता है कि दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम है और टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट भी सेम है। दोनों रेजिस्टेंस का करंट वही है जो टोटल करंट है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज दोनों की अलग अलग है, ठीक है, दोनों की वोल्टेज अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। ओके, सो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस। Solve these 2 points. Rajneesh Singh, I is equal to 22/6. Let's see करंट की वैल्यू क्या आती है। देखिए करंट तो दिया नहीं हुआ तो हमें इस फॉर्मूले से निकालना है V = I R।
आई वही है जो टोटल करंट है, तो हमें टोटल वोल्टेज पता होनी चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल आर, टोटल आर आप कैसे निकालोगे? सीरीज में है ना? तो 20 प्लस 40 60। So value of I will be 22 by 6, 11 by 3 amperes. Unit of current is amperes. So the answer is 3.66 amperes. Mayan Joshi is right. 3.66 ampere is the total amount of current flowing in this circuit. That is very simple. Simple formula लगाना है, V is equal to R, total resistance निकालना। Now, what is the second point? Second point में क्या पूछा है? उसका भी आंसर बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों में वोल्टेज अलग अलग है, तो 20 ओम वाले का पूछा है। तो वोल्टमीटर यहाँ पर ऐसे पैरेलल में कनेक्ट है, कितना होगा? फॉर्मूला सेम यूज होगा, बट रेजिस्टेंस हम वही यूज करेंगे जो पूछा है। आई तो सेम है, कितना आया था हमारा? 11/3। ओके, रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस पूछा है? 20 ओम। सो 20 ओम की रेजिस्टेंस पूछा है, दैट विल बी 220/3। 73.3 volts. That will be the voltage across 20 ohm resistance. Okay, 73.3 volts. Any doubts? इसमें रेजिस्टेंस हम टोटल नहीं लेंगे, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अलग है, टोटल रेजिस्टेंस अलग है। हमें वोल्टेज सिर्फ 20 ओम के अक्रॉस निकालनी है, तो 20 ओम ही हम लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का असाइनमेंट मैं फिर से बता देता हूँ, एनसीईआरटी बुक में जो भी एग्जांपल्स हैं सारे सॉल्व करने हैं आपको अपनी किसी भी नोटबुक में और सेंड करना है। इस सर्किट में हम थोड़ा चेंज करते हैं, दोनों सीरीज में थे ना अभी हम इनको पैरेलल में करते हैं, लाइक दिस। These two resistances are in parallel. When two resistances are combined in parallel, ठीक है। अभी देखिए, ये है 10 ohms, ये है 20 ohms and this is 220 volts. ओके, अभी मैं वोल्टमीटर एमीटर लगा रहा हूं इधर, आप मुझे वैल्यूज बताएंगे। एक एमीटर यहाँ लगा हुआ है, एक एमीटर यहाँ लगा हुआ है और एक एमीटर यहाँ लगा हुआ है। अब आप बताइए, तीनों में वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग आएगी? इन तीनों एमीटर्स में वैल्यू विल बी द सेम और डिफरेंट। जो आपको तीन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, सॉरी दो रेजिस्टेंस जो है, इनमें वैल्यू, एमीटर में वैल्यू सेम आएगी या अलग? ऑब्वियसली द वैल्यू विल बी डिफरेंट, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। 10 ओम का करंट अलग होगा, 20 का अलग होगा और टोटल अलग, राइट? सो इसमें आपसे पूछेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस रेजिस्टेंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस रेजिस्टेंस। ओके, अगर मैं वोल्टमीटर लगाता हूं, इफ आई कनेक्ट वोल्टमीटर, वोल्टमीटर तो पैरेलल में लगता है, एक वोल्टमीटर इधर है, एक वोल्टमीटर। Tell me this voltage, one voltage, second voltage, और ये 220 वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज, ये वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट है? Same, because value of voltage in parallel circuit is same in different resistances.
तो टोटल जो है वही इसमें भी 220 है, इसमें भी 220 वोल्ट। ओके, नो कंफ्यूजन। तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी 60 ohms, 20 ohms and 60 ohms 220 सोल्व करना है आपको ही पेपर पेन पर। फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस वो तो आप निकाल ही होंगे, वो तो बहुत सिंपल है, काफी बार कर चुके हैं। ये मतलब आप लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टर। करंट इन ईच डिवाइस या रेजिस्टर। सेकंड पॉइंट है वोल्टेज इन ईच डिवाइस इन रेजिस्टर। स्टार्ट करिए लिखना। सोल्व दिस न्यूमेरिकल। सोल्व दिस न्यूमेरिकल। देखिए सेकंड पॉइंट में तो कुछ करना ही है। वोल्टेज इन ईच रेजिस्टर, वोल्टेज तो पैरेलल में सेम ही होती है, तो टोटल वोल्टेज तो सेम ही है। इसका आंसर 220 वोल्ट है। सेकंड का आंसर मैंने बता दिया 220 वोल्ट। फर्स्ट करना है आपको, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट निकालिए अलग अलग होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? V IR। वोल्टेज तो सेम है, हमें पता है 220। I की वैल्यू हमें निकालनी है। I की वैल्यू अलग अलग है हर रेजिस्टेंस में। 20 ओम में निकालना है तो 20 लिखेंगे। I की वैल्यू विल बी 11 एम्पियर। ओके, अब हमें 60 ओम में निकालना है करंट, सो I विल बी 220 by 60, right? I is equal to V by R, 220 by 60, that will be 11 by 3 amperes, 3.66 amperes, right? So amount of current flowing in 20 ohm is 11 amperes and amount of current flowing in 60 ohm resistance is 3.66 amperes. Okay, ईच रेजिस्टर में आपने निकाल दिया, साथ में आपको टोटल करंट भी निकालना है। एंड टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो दोनों आई निकालकर ऐड कर लीजिए। I1 is 11, I2 is 3.66, so total current will be 11 plus 3.66, 14.66 amperes. That will be the total current. या फिर आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल कर भी टोटल करंट निकाल सकते हैं। V is equal to IR, तो आपको टोटल RT निकालना पड़ेगा। 1/20 plus 1/60, that will be 1/20 plus 1/60, 4/60 हो गए, सो 15 ओम जो है टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तब आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू विल बी द सेम 14.66 amperes. Okay, so the point is आपको ध्यान रखना है करंट की वैल्यू कहाँ सेम है कहाँ डिफरेंट है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल करंट पूछा है या फिर अलग अलग रजिस्टर में पूछा है, सो दैट वी कैन फाइंड। टोटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल में तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाल कर करना होता है। जब ईच रजिस्टर में पूछते हैं तब आपको ध्यान रखना है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। असाइनमेंट फॉर टुडे लिख लीजिए। टुडेज असाइनमेंट आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है करंट इन ईच रजिस्टर। इसी को दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया है, तो क्वेश्चन में पूछेंगे फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग बताओ। कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज है। वो करंट की वैल्यू पूछ रहा है इस रजिस्टर से। अगर एमीटर यहाँ लगा है, रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी वैल्यू ऑफ करंट इन दिस रजिस्टर। वोल्टमीटर का भी पूछ सकता है अगर सीरीज में कनेक्टेड है। सो अगर वोल्टमीटर को यहाँ पर अटैच कर देते हैं
क्वेश्चन विल बी फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो, मतलब इस रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज है उसकी वैल्यू निकालो। तो वो भी आप निकाल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ओके, so assignment for today is solve the numericals, solved examples in NCERT book। सोल्ड इसलिए कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें देख लो, पहले आपको खुद करना है, कुछ समझ नहीं आया तो ही बुक में देखना है। ओके, so that was your class for today is over। Thank you।